अच्छे से समझो, मैंने एक गाना बनाया है और वो गाना मैं रिलीज करना चाहता हूँ, राइट? मुझे गारंटी गाना चाहिए हिट। उसकी तो कोई गारंटी, किसी का बाप आपको उस चीज की गारंटी नहीं दे सकता। आपकी प्रॉब्लम्स पैसा खत्म नहीं कर सकता, आपको पैसा खुश नहीं कर सकता, पर 90% प्रॉब्लम से सॉल्व कर देगा। आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट अ ह्यूमन बीइंग कैन गिव टू अनदर ह्यूमन बीइंग इज the right recommendation of books. I was so deeply patriarchal. तो हमें लगा कि हम तो बस हम ही हैं, you know. And then when I went into therapies, when I realized how deeply I was patriarchal. My WhatsApp block list is bigger than my contact list. तो जो मुझे पसंद नहीं आता मैं सीधे उसको ब्लॉक कर देता हूँ। Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. आज वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास है बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स ऑन द चैनल. मैं खुद का ही एक एपिसोड चलचित्र टॉक्स पे रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज आई रिकॉर्डेड दिस कन्वर्सेशन अ फ्यू वीक्स बैक एंड आई स्टिल थिंक अबाउट हाउ मच फन आई हैड while doing this. Today's episode is with Nucleya, who is an electronic music artist, one of my favorites from India also. न्यूक्लिया के साथ मैंने बहुत सारी बातें की, नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक बट ऑल्सो अबाउट बुक्स, हिज फेवरेट यूट्यूब चैनल्स. वी टॉक्ड अबाउट आर्टिस्ट फटीग, वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स. मैंने उनको एक स्टोरी बताई थी अबाउट हाउ आई डिस्कवर्ड हिम. 1.5 घंटे का एपिसोड है, बिल्कुल मस्त कॉफी वॉफी बना के बैठो, मजा आ जाएगा. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स. वी मेक रिकमेंडेशन बेस्ड वीडियोस. हमारा अभी एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर बुक्स. इसका नाम है किताबी कैबिन्स. वो भी जाके सब्सक्राइब कीजिए. चलचित्र टॉक्स भी सब्सक्राइब कीजिए. एंड नाउ लेट्स जंप राइट इनसाइड द कन्वर्सेशन आई हैड विद न्यूक्लिया. Hi Nucleya, how are you? Welcome to I'm Chalchitra very good. Talks. Thank you very much. Pleasure is mine. Very excited. I want to tell you something. I have a very cool Nucleya story, and I think you Okay. are going to love it. Okay, Okay. so back in 2012, so my girlfriend was in IIT Bombay, and I was studying in some other engineering college, and Mood Indigo was happening, and I had gone to meet her. This is 2013, 14, I think 13, Oh 14 wow. ka Mood Indigo, right? हाँ, 10 साल So पहले there was this. almost. हाँ, so उस टाइम के अराउंड देयर वाज दिस परफॉर्मेंस व्हिच वाज हैपनिंग इन मूड इंडिगो. कोई डीजे आ रहे थे, राइट? तो मेरे को लगा अरे बाहर से आ रहा है कोई तो खतरनाक सा होगा बिकॉज आई एम रियली इनटू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. और फिर बाद में पता चला कि इसी का ओपनिंग एक्ट है, कोई न्यूक्लिया करके है. अरे ठीक है, होगा तो सुन लेंगे. देन आई गो Yeah. देयर and Yeah. I see on act this, and Yeah. it was one of my craziest stage experiences, right? That's so sweet of Concert you, man. experiences. Thank you so much. And the actual act was pathetic, and I was so underwhelmed कि ऐसा होता है ना कि opening act इतना अच्छा है तो main कितना अच्छा होगा. I remember the visuals I was seeing आपके act में. I think because Koocha Monster is one of my favorite album of yours. आज I go to play tennis every morning, और आज मैं पूरे रास्ते I was just listening to it again, and it just has been very influential in my life. So yeah, that was my Nucleya experience. So I have a question here. Have you ever been to any concerts or events where the opening act was the better one than the main act, and you are like, this is so cool, I discovered someone through the opening act? Actually, in general, usually क्या होता है ना कि ये मेरा एक्सप्लोरेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मैंने यूजुअली ऐसा नोट किया है कि जब एक आर्टिस्ट पॉपुलर हो जाता है तो of course उसको headlining slots मिलने लगते हैं. So then you become a closing act, you know, because now you're popular, people want to listen to your music and they're consuming your music on maybe radio or whatever, streaming services or whatever, you know. And the more you become popular, the more you become successful, to a degree, the more you start getting more insecure, you know. तो ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारे डीजेस के लिए ओपन किया है. तो वो बोल देंगे कि भाई आप मेन स्टेज पर बजाओ, वहाँ पे छोटा वाला आपके पास वो रेडी टाइप हम एक वो लगा देंगे, आप वहां पे बजाओ, यू नो. ऐसा कई बार होता था. फिर ये भी होता था कि हम आपको लाइट्स नहीं देंगे, यू नो, आप बिना लाइट के बजाओ. Shit. Yeah, that also used to happen. Another thing that they do is that we'll not give you screen, and we will also give you
say only 40% of the sound system in terms of volume. Damn, it's Yeah. that ugly. The dark side of It's really bad. It's really bad. I don't know how often it happens now, because I have not opened for anyone in a very long period of time. I don't do it because I know मेरे साथ हुआ है तो मैं ये कितनी बार तो इंटरनेशनल डीजेज आते हैं तो उनकी मैनेजमेंट पहले बोलती है भाई आप बजाने क्या वाले हो वो बताओ, तो आप पूरी लिस्ट, shit. हाँ लिस्ट बना के दो, फिर उसमें से बोलते हैं ये वाला गाना मत बजाना, ये वाला गाना मत बजाना, ये वाला गाना मत बजाना, ये वाला गाना मत बजाना। तो कुछ हद तक वो कारगर भी होता है कि आप अम, अम, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी अगर बजाएंगे तो लोग थक जाएंगे, तो फिर जब मेन एक्ट की बारी आएगी तब वो नाच नहीं पाएंगे। उस नजरिए से ठीक भी है, पर दूसरे नजरिए से गलत है कि आप गलत है। एक आर्टिस्ट को कैसे डिक्टेट कर सकते हो कि उसे क्या बजाना चाहिए क्या नहीं बजाना चाहिए, या आप चूज करो पहले से कि भाई हम इस वाले ओपनिंग एक्ट से ओपन करवाना चाहते हैं, यू नो, so then it becomes much easier. Anyways, I've started bitching about like the scene, but my point is that uh, that's why it becomes very difficult for an opening act to really shine sometimes, you know. मेरे साथ कम हुआ है, मुझे जो परेशान करते थे ओपनिंग एक्ट के टाइम पे कि ये वाला गाना मत बजाना, वाला गाना मैं बोल देता था मत नहीं बजाऊंगा, मैं जाके बजा देता था। क्या मुझसे कर बोलते थे लोगे? मुझसे बोलते थे वॉल्यूम कम रखना, मैं अंदर जाकर पढ़ा देता था। और मेरी वॉल्यूम काटते थे तो फिर मैं वो माइक पे पब्लिक के साथ बात करता था, मैं उनको बोलता था तुमको वॉल्यूम कम लग रही है तो बोलो जोर से वॉल्यूम कम लग रही है। Oh. हाँ, तो मैं उनकी मन में बड़ा परेशान करता था। तो Do you खैर आई remember फाउंड this माय one? I am talking about the IIT Bombay one. Do you remember like this? Like I have very less recollection of this. My apologies. मैं बहुत ही थका हो गया हूँ तो मेरी याददाश्त थोड़ी सी तकलीफ देती है मुझे। इसमें एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि आप जैसे बता रहे हैं कि साउंड नहीं देते वगैरह, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी ऑफ दैट वन थिंग कि जो विजुअल्स भी चल रहे थे व्हेन यू वर परफॉर्मिंग कूचा मॉन्स्टर्स के सॉन्ग, एक बिल्ली आ रही थी 3D ट्रायंगल में से। मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी थी, वो बिल्ली आए जा रही है एंड आई एम लाइक ब्रो। Yeah, yeah, बड़ा मजा आता था। No, I had a great team back in the days. तो वो बहुत ही बढ़िया काम करते थे सब लोग साथ में मिलके। I still have a great team actually. इस जैसे पिछले 3-4 सालों में मैंने बहुत ज्यादा आराम कर लिया है। तो now I mean आराम in the sense that I didn't travel of course, but I didn't also participate in कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं टीम बनाऊंगा, मैं और shows करूंगा. Now I'm going to do that. So I'm preparing for it. नाइस Album is almost in place. Music videos are almost in place. So interesting time. नाइस। बट आई डिडंट गेट टू नो ऑफ एनी लाइक ऐसे आर्टिस्ट जो आपको ओपनिंग के एक्ट्स के थ्रू मिले, बट लाइक इन जनरल हु आर लाइक सम ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग नेम्स इन लाइक द इंडी इलेक्ट्रॉनिक सीन जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, लाइक द न्यू वंस, द यंग वंस जिनका आपको म्यूजिक बहुत ज्यादा डिफरेंट और फ्रेश लग रहा है? Because I haven't opened for or neither do I go in like um, music festivals as a listener. मैं बहुत कम म्यूजिक फेस्टिवल्स में जाता हूँ। मुझे जो देखने को मिलता है वो है जो लोग मुझसे पहले मेरे लिए ओपन करते हैं, तो मैं ट्राई गॉट इट। करता हूँ कि मैं जाके देखूं। नाइस। ऐसा नहीं कि मैं ग्रीन रूम में बैठा रहूं, क्योंकि आप वो तो आप कर ही सकते हो, तो सबसे हाँ आसान चीज है, हाँ हाँ पर हाँ। जाके आर्टिस्ट आप देखो तो ज्यादा मजा आता है। जैसे अभी मैंने दिल्ली में एक शो किया था, देयर वाज दिस आर्टिस्ट कॉल्ड लश लता, एंड she did a wonderful set. While she was on stage, I realized that I used to host a radio show on BBC Asian Network way back in the ओके। days. तो तब मैंने एक बार उसके साथ मैंने भी नहीं डायरेक्टली, आई थिंक माय टीम इंटरेक्टेड विद हर एंड वी रियली फाउंड हर म्यूजिक इंटरेस्टिंग। तो हम तब भी बजाते थे, फिर दिस कोइंसिडेंटली हैपेंड एंड आई सॉ हर ऑन स्टेज एंड वेरी गुड म्यूजिक। सो these are one of few ways for me to basically गॉट इट। see what's happening in the scene. Otherwise, how do I discover new talent? Mm, Spotify, online. YouTube, like how do you like go Yeah. there like for okay? Yeah, I'll be very honest with you. The new music that I've been seeing, no, like top 100, 200 global, is all not very interesting. The indie music that's coming out from India, very interesting stuff. Film Yeah. music, not so much, but some film music is really good. हाँ,
मैं before the episode I was just going through some of your articles where you had said कि you hate mainstream electronic music. I think आपके बहुत पुराने वो हैं, मेरा भी, that is why I think I connected with you back in like Mood Indigo also. And मेरे को हमेशा से, जैसे एक ना MTV पे शो आता था साउंड ट्रिपिंग करके, स्नेहा खनवालकर का, मेरे को लगा यार ये इंडस्ट्रियल नॉइसेस के साथ जैसे म्यूजिक क्रिएट कर रही है. एंड टुडे आल्सो द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आई एम इनटू, मेरे को ना नॉन मेलोडिक म्यूजिक जहाँ पे तुम बस ऐसे साउंड्स के साथ कुछ कर पा रहे हो. लाइक वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, टेक्नो आर्टिस्ट इज एंडी स्टॉट. उनका एक बॉयलर रूम है, मैं मतलब रोज सुबह सुनता हूँ ऑलमोस्ट, और उसमें कुछ नहीं हो रहा है. मेरे दोस्त लोग ऐसे पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो लाइक उनको ऐसा होता है कि ये क्या सुन रहा है. बट लाइक नॉन मेलोडिक म्यूजिक एंड लाइक प्योर इंडीनेस जहाँ पे मेलोडी नहीं है, विदाउट वोकल्स वाले भी मेरे को कभी कभी बहुत पसंद आते हैं. सो जस्ट लाइक ट्राइंग टू टेल यू अबाउट कि हमेशा से मेरे को ऐसा अट्रैक्ट किया, एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो हैड अ थिंग फॉर लाइक जैसे बांग्ला बेस जैसे आपका जो सॉन्ग है, आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स कि ओ शिट इट इज सो डिफरेंट, लाइक इट्स वेरी डिफरेंट. तो आपको कभी आपने मतलब म्यूजिक इन द लाइक दी साउंड्स, और आपको उनमें मजा आता है कि यार यार यहाँ पे एक अच्छी धुन है, नॉट नेसेसरली इट हैज टू बी मेलोडिक. यार कल की ही बात है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है नितिन सुख, ही इज कम टू गोवा. तो मैं कल उसे मिलने के लिए गया, तो उसने मुझे अपनी लोकेशन भेजी, मैंने वो डाली गूगल मैप्स पे और मैं ड्राइव करने लगा. अब वो बोलते हैं ना गूगल मैप्स में कि भाई आगे ये चक्कर आने वाला है, वहां से आप लेफ्ट ले लीजिए, आगे से आप राइट ले लीजिए. तो बार बार एक ही चीज आ रही थी, वो बोल रही थी मापसा अरपोरा चपुरा रोड, चपुरा मापसा अरपोरा रोड, ये टोन में बोल रही हो बार बार. और मैं हंसे जा रहा हूँ गाड़ी में बैठ के, मुझे बड़ा मजा आ रहा है. तो मैंने एक दो चक्कर एक्स्ट्रा घुमाए खाली वो सुनने के लिए वहीं पे. तो मेरे को बोल रही है मेरी वाइफ कि यार ये है तो बड़ा कूल सा, ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा. इट जस्ट हैपेंड दैट द वे शी वाज सेइंग इट, नो, इट ऑलमोस्ट लाइक बिकेम a melody, which was cool. It was very Which cool. is very cool. जैसे एक आर्टिस्ट है यशराज मुखाटे, जो छोटी छोटी ऐसे वो ये करते हैं, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, अब उन्होंने उससे धुनी बना ली. इट्स सो एक्साइटिंग, सो डिफरेंट. आप जो बात कर रहे हो ना वो, you will see that what happens is the reason why you don't enjoy mainstream is also because mainstream has become boring, because everybody is doing the same thing. वही सारे same chord structures में म्यूजिक बनता है, वही same सारे scales में म्यूजिक बनता है, तो उनकी सबकी मेलोडीज भी मोर और लेस वही पॉप स्टाइल की मेलोडीज होती है. तो क्या होता है कि उसमें कुछ नयापन नहीं है, आपको देख के कुछ एक्साइटमेंट नहीं आ रहा. आप सोच रहे हो कि हाँ ये तो पिछले वाले गाने में भी तो किया ही था ना आपने. बिल्कुल. हाँ, और वो बोल रहे तुम तो छोड़ो, बाकी के जो 25 लोग हैं वो भी यही सेम चीज कर रहे हैं, यू नो. सो देयर इज नो वे फॉर you to become unique, you know, you to become क्या बोलते हैं उसको, एक अलग जो साउंड होती है ना, आप सुनो और आपको ऐसा लगता है यार ये तो बिल्कुल अलग था, ये कैसे, ये कहाँ से आया, you know, those sort of things I feel are very important for any artist. That uniqueness is very important. तो जब फिर ये भी होता है कि कई बार कि वो आर्टिस्ट फिर पिछले 5 साल से भी वो कर रहा था, अगले 10 साल में भी वही कर रहा है. फिर आप बोल रहे तो सुन लिया ना हमने, तो आगे क्या है, आगे की कहानी बताओ आप, you know. So the more you will listen to the same thing again and again, the more it will become boring for you. That's why it becomes very important for an artist to keep reinventing himself. And in the process of reinventing, you will fail multiple times, but it's fine because at least you're moving in the right direction, you know. तो वाली बात है. मेरे को एक और चीज आपसे जाननी है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में पर्टिकुलरली जितना पढ़ा है या डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, आफ्टर लाइक 5 to 10 years मेरे को शेल्फ लाइफ ऐसे लगती है ऑफ एन आर्टिस्ट जो उनके दिमाग में खुद होती है, जिसके बाद वो बोर हो जाते हैं कॉन्सर्ट्स करके, एंड दे काइंड ऑफ रिटायर एंड दे काइंड ऑफ स्टॉप डूइंग इट, एंड दे काइंड ऑफ लाइक पूरा ही मन उठ जाता है. जैसे जैसे अविची के ऊपर जब एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, मैंने जैसे वो बार बार भी कह रहे थे कि डजंट एंजॉय इट एनीमोर. डाफ्ट पंक का भी जैसे वो दे आर नॉट लाइक टुगेदर एनीमोर, दे आर नॉट मेकिंग म्यूजिक एनीमोर. उससे पहले एसएचएम, वो कौन सा था, एसएचएम ही है ना जो, या दे आल्सो आर नॉट क्रिएटिंग म्यूजिक एनीमोर. व्हाई डज दिस हैपन? और मैंने पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में देखा है एकदम से लोग छोड़ क्यों देते हैं ये. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. सब आर्टिस्ट का मुझे लगता है अलग रीजन होगा. ज्यादातर बर्नआउट हो जाता है कि अब जैसे
आपने समझो फेमस होने से पहले 5-10 साल लगाए और आपको उस प्रोसेस में एक नया कुछ मिल गया, यू नो, कि ये मेरा साउंड है, ऐसा किसी के पास नहीं है साउंड, ये मेरा अकेले का है, यू नो। राइट। तो फिर आप उस फॉर्मूला को यूज करके अपना म्यूजिक बनाना शुरू करते हो। वो म्यूजिक आपका लोग कंज्यूम करते हैं, उनको पसंद आने लगता है, आप हिट हो जाते हो। फिर आप बड़े बड़े फेस्टिवल्स हेडलाइन करने लगते हो, आपका म्यूजिक सब जगह पे बजने लगता है, पिक्चरों में भी चला जाता है। But you completely forget that you invested about 5 to 10 years of your life ट्रू। finding a sound. Now that sound is used, saturated, and it's gone. Now you need another 5-10 years to be able to come up with a new one, you know, which is as um, revolutionary, for a lack of a better word, which will change the perspective of whatever is being consumed in the market, you know. तो पहले के जमाने में आप देखना, जब जैसे वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बैंड्स इज रेड हॉट चिली पेपर्स, और ऐसे कई सारे दूसरे बैंड्स भी हैं। वो एक एल्बम बनाते थे, 2-3-4 साल लगते थे उनको एल्बम बनाने के लिए, फिर 4-5 साल वो उसी एल्बम को लेकर ट्रैवल करते थे, फिर वो ऐसे आराम करते थे, और फिर ऐसे 5-6-7 साल 8 साल के बाद उनका एक दूसरा एल्बम आता था, और वो भी उतना ही खतरनाक एल्बम होता था, यू नो। आप सोचते, सर पकड़ के बैठ जाता था इंसान कि यार हर गाना इतना अच्छा कैसे हो सकता है इस इंसान का, ट्रू। यू हाँ। नो। पर वो जो 7-8 साल इंसान लगाता है ना, वो उसमें उसमें उसका एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ है, वो गाने के अंदर, यू नो, वो एल्बम के अंदर। अब आप you're struggling, you're burning yourself out. There is literally no time for yourself, for your self healing, for your self awareness, for you to consume new music and feel inspired to have great conversations with ट्रू। like minded ट्रू। people who it's disappeared. There is nothing left now. तो अब जो छोटा मोटा बचा हुआ है, हम वो करते हैं। फिर what happens is that now you reached such a high level that you don't want to fail. अब तो मेरे को हिट ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, यू नो। अब हिट हम मैं लाऊं कहाँ से? अब मैं तो बना नहीं पा रहा हूँ, यू नो। तो फिर हम क्या करते हैं, हम आउटसोर्स करना शुरू करते हैं। इसलिए आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े डीजेस हैं ना, उन सब की एल्बम की विकिपीडिया के एल्बम पेज पे आप जाओगे ना, वहां पे एक गाने के नीचे 20-20 आर्टिस्ट हैं। एक सॉन्ग राइटर अलग है, सिंगर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, कंपोजर अलग है, लिरिक्स कोई और लिख रहा है, उसको फाइनलाइज कोई और कर रहा है। कुछ आर्टिस्ट हैं जो अपने आप तो खुद करते भी नहीं है। आई डोंट वांट टू जज एनीवन, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बट आई एम ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग आउट इन अ वेरी फैक्चुअल वे, यू नो। राइट राइट ये राइट। हो रहा है, अब आप खुद गणित करो कि इसका निवारण क्या निकलेगा। काफी सैड है लेकिन ये, लाइक इट्स वेरी It सैड। is. It is. That's why you will see that a lot of the artists, no, they don't really care. उनको ऐसा लगता है कि जब मेरा दिल करेगा तब मैं एल्बम रिलीज करूंगा। या या मैंने जल्दबाजी नहीं करनी। आपको नहीं सुनना मेरा म्यूजिक तो मत सुनो। केंड्रिक लमार की जैसे अभी 5 कितने सालों बाद आई है एल्बम Yeah, ना। but that is how it should be also, no? या तब या आपको मजा भी आएगा ना वो। और अच्छी अच्छी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास 10 ही आर्टिस्ट हैं। हमारे पास ट्रू। इतने सारे आर्टिस्ट हैं, सबको चलने दो ना धीरे धीरे। या अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने एक स्पॉटलाइट दिए, एक स्पॉटलाइट के नीचे जो आर्टिस्ट नजर आ गया उसी को फेम मिलेगा, you know. या That's a spotlight that he created. You have your own spotlight, ट्रू you know. ट्रू। So the point is that you don't have to feel insecure if somebody releases a piece of music and that becomes big, कि अब मेरी बारी नहीं आ पाएगी क्योंकि इसने शिट। जगह छीन ली। अब छीनी नहीं है, उसकी स्पॉटलाइट है, आप अपनी स्पॉटलाइट लगा के चले जाओ आगे, you know. या एंड आई थिंक इस पूरी इक्वेशन में वो जो सबसे बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है, जो इंस्टा रील्स में म्यूजिक आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम रिवॉर्ड्स रेप्लिकेशन, नो, कि अगर एक ही म्यूजिक हर जना अपने यूज कर रहा है, जैसे अगर मैं अभी इसकी क्लिपिंग डालूंगा और पीछे वो श्रिवली या कुछ ऐसा म्यूजिक डाल दिया, chances of this going viral are higher, right? So they really want you to like align, एक ही चीज करो, एक ही चीज करो, and it's so sad. It's really sad. वो होता क्या है ना कि हम एज एन आर्टिस्ट नो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं और हमारी बहुत फटती भी है, यू नो। हमें हमें डर लगता है कि यार ये अगर हिट नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, दूसरा गाना बना देना, और तो क्या ही होगा, यू नो। एंड द थिंग इज दैट बिकॉज एवरीथिंग इज रन थ्रू नंबर्स, हम नंबर्स के लेंसेज से ही सब कुछ देख रहे हैं। एवरीथिंग वी लुक थ्रू। अब जैसे हम I mean, I don't want to point at any one particular artist, to be honest with you. As I said earlier, I'm not judging anyone, neither am I pointing fingers at anyone. I'm trying to put the facts out so that everybody understand what's happening. कई सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके आप YouTube पेज पे जाके देखोगे तो
ऐसा 2, 5, 6, 10 मिलियन से तो उनका वो बोलते हैं ना शुरुआत होती है. Their songs will go 200, 300, 400, 500 million views, Damn. you know, Yeah. but their on ground translation is not there, you know, when it comes to maybe being able to sell tickets, for example, that doesn't happen, you know. क्योंकि आई थिंक वहां पे भी रेप्लिकेशन ही चल रही है एक सेम धुन पे जो सब खेल रहे हैं. इज दैट सो? नहीं, और चक्कर क्या हो रहा है ना कि अब जैसे समझो मैंने एक गाना बनाया है और वो गाना मैं रिलीज करना चाहता हूँ, राइट. मुझे गारंटी वो गाना चाहिए हिट, राइट. राइट. अब उसकी तो कोई गारंटी, किसी का बाप आपको उस चीज की गारंटी नहीं दे सकता. आप कोई भी आर्ट जो रिलीज होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आर्ट फेमस होगा कि नहीं होगा, या उसको लोग पसंद करेंगे, उसको नहीं पसंद करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट. पर हमको चाहिए गारंटी. क्यों? क्योंकि हमारा वो जो अंदर का इनसिक्योर वाला चैनल है ना, वो बड़ा सा नरम नरम रहता है. तो we find various muscle power to do that, and one of the muscle power is to be able to inflate numbers on YouTube, you know. कि हमारे थी 1 मिलियन की, पर हमने उसको 10 मिलियन कर दिया, या हमने उसको 50 मिलियन कर दिया, या हमने उसको 100 मिलियन कर दिया, you know. अब वो 100 मिलियन लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, that we don't know. If it is your target audience or whether they really like your music, we don't really know. आप समझ रहे हैं? पर हम एज एन आर्टिस्ट ये चीज होने देते हैं. In like the middle of all of this, how do you make sure कि you don't get like very affected by it? थोड़ा तो शायद होते ही होगे कि यार वो ego या insecurity आ जाती होगी, but how do you maintain एक level पे कि the calmness or the zen? Like, do you have a ritual, morning ritual or a way of unwinding every day? या कि यार ये एक होता है ना सोशल मीडिया हाइजीन का भी एक पार्ट होता है कि यार ये चीज मेरे को बार बार चेक नहीं करनी, लाइक सो दैट आई कैन आल्सो बी इन माय जोन. डू यू हैव एनी like rituals like that? I do. For example, my WhatsApp block list is bigger than my contact list. So जो मुझे पसंद नहीं आता मैं सीधे उसको ब्लॉक कर देता हूँ. I Very do nice. exactly the same thing on Instagram also. इंस्टाग्राम कंज्यूम करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, उसमें बहुत कॉमेडी चीजें आती हैं, तो मैं देखता हूँ. मुझे मीम्स बहुत पसंद है, तो मैं वो मीम्स देखता हूँ बैठ के. पर मुझे ये भी पता है कि कब मैं ऐसी कोई चीज देखूं जो मेरे मन पे हावी हो जाए. तो उस चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए सुबह उठ के मेडिटेट करता हूँ. सोने से पहले मेडिटेशन करता हूँ. एक एक बहुत अच्छा इंसान है जिसका नाम है विम हॉफ. ही इज फ्रॉम नेदरलैंड्स. ही इज इन्वेंटेड अ वे ऑफ ब्रीदिंग दैट बेसिकली reduces your heart rate and also reduces your cortisol levels. तो यानी अगर आपको ऐसा बहुत एंग्शियस फील हो रहा है, अगर आप उसकी मेथड से ब्रीथ करेंगे तो 15 मिनट के अंदर all of that will just go away. So these two things I do very very regularly. सुबह उठते ही तुरंत मेडिटेट करना, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, और सोने से पहले सेम चीज करना. उसके अलावा किताबें पढ़ता हूँ. तो जैसे अगर मेरे पास मानिए एक दिन के 3 घंटे हैं बर्बाद करने के लिए, तो मैं उसको अच्छी तरीके से बर्बाद करता हूँ कि मैं 1 घंटा सोशल मीडिया पे बर्बाद करूंगा कुत्ते बिल्ली के मीम्स देख देख के, और बाकी 2 घंटा मैं बैठ के किताबें पढ़ूंगा. जो भी मुझे अच्छा लगे वो मैं पढ़ता हूँ. इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे ए पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है. जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे मजा आता है पढ़ने में, मैं वो पढ़ता हूँ. नाइस. आप मेडिटेशन गाइडेड करते हैं या लाइक अनगाइडेड मेडिटेशन? कैसे करते हैं आप मेडिटेट? मोस्टली अनगाइडेड करता हूँ. गाइडेड मेडिटेशन तब करता हूँ जब मुझे कोई ए पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेट करना हो. तो जो चीज मुझे पता है, जैसे फॉर एग्जांपल काफी बार ऐसा महसूस होता है कि मैं क्रिएटिवली कहीं फंस गया हूँ, यू नो, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, या मुझे 10 दिन हो गए मैंने कुछ धमाकेदार कुछ बनाया नहीं है, यू नो. तो कुछ ना कुछ चीज होती है जो आपके आड़े आ जाती है, आपकी सोच के आड़े आ जाती है, आप उसके आगे सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ तो भी गड़बड़ होता है उसके अंदर. उस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करूं. तो या तो आप किसी के साथ बात करें जिसको इस चीज का ज्यादा ज्ञान है, या आप अपने आप से बात कर सकते हैं, जो कि मैं करता हूँ यूजुअली मेडिटेशन करते वक्त. यू नो, आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट विथ माय फिजिकल सेल्फ, यू नो, देन आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ माय फिजिकल सेल्फ एज फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव, यू नो, कि भाई क्या हो रहा है बताओ, यू नो, कैसे ऐसा हो गया. So it's an approach that I learned from a book.
एंड इट वर्क्स इन माय फेवर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ उसकी वजह से। जी मैं आपसे दो चीजें यहाँ डिटेल में जानना चाहता हूँ. विम हॉफ वाज द नेम दैट यू मेंशनड, राइट? लाइक Mm-hmm. हाउ डिड यू डिस्कवर हिम एंड कैन यू टेल अस मोर अबाउट हिम? So, I think I found him through YouTube. I consume a lot of YouTube also. So, उसमें मुझे so I read a lot about health. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हेल्थ के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें हेल्थ के बारे में ज्यादा पता नहीं है अच्छे से पता नहीं है, कि किसी ने पढ़ाया ही हाँ, नहीं. हाँ. किसी ने वो किताब पढ़ाता ही नहीं है हाँ. कोई, तो हमारा हाँ. कसूर भी नहीं है। पर यह है कि अब हम पढ़ सकते हैं तो हमें पढ़ना चाहिए उसके बारे में। एग्जैक्टली. तो मैं एग्जैक्टली. बहुत पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में पढ़ने में। तो उसके चक्कर में किसी चीज को मैं सर्च कर रहा था, तो सर्च करते करते मैं आई केम अक्रॉस दिस गाय विम हॉफ, who apparently has climbed like one really big icy mountain or snowy mountain or whatever it's called, just in his trunks. ओह डैम. Yeah, without any oxygen cylinder or without any, और ऐसा भी नहीं कि वो अकेला जाता है, वो ऐसे बाकी के लोगों को भी लेके जाता है। जो कि like you have to train to do something like this, you know, physically you have to train yourself, mentally you have to train yourself, but he's saying that you have a lot of control over your body which you don't realize, and my breathing helps you get that control back. So what he can do is he can control his body temperature just by breathing. His own ओह body temperature he can नाइस. control just by breathing. There are multiple, he's got a really nice book. If you get a chance, you should read it. I can't remember the name of the book now. He also has an app called WHM, if I'm not mistaken. It's a really, really good app where he will update you, of course, with like what's happening. And he teaches his technique of breathing. गॉट इट. तो हाँ, मैंने ऐसे ही ढूंढा था इसको. And then he दिस इज follows me वेरी on Twitter. So cool. So nice. नाइस. मैं यहाँ पे आपने हेल्थ की बात की, मैं भी इनफैक्ट अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ लाइक हेल्थ के ऊपर. बिल ब्राइसन की किताब है, इट्स कॉल्ड द बॉडी, एंड इट Nice. हैज लाइक सेपरेट चैप्टर्स हर चीज के ऊपर. आपके ब्रीदिंग के ऊपर एक है, स्लीप के ऊपर Nice. एक है. आई रेड वन चैप्टर ऑन फूड, क्योंकि मेरे को ना पूरा विटामिन का गेम अभी पता चला है. अच्छा. मेरे को पता चला विटामिन B12 आई हैव लाइक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. डी तो काफी लोगों को होता ही है, B12 जी. मेरा बहुत कम था, जी. राइट? और इन जनरल पीपल टॉक अबाउट कि यार ये ध्यान रख लो, ये कर लो. पीपल डोंट टॉक इनफ अबाउट विटामिन, राइट? Right. कि ये Right. और दी वंस दैट वी पर्टिकुलरली मिस, जैसे B12 का क्या यूज है, या इससे आपके एनर्जी जी. लेवल्स कैसे बढ़ सकती है. Yeah. तो मैंने ये सब पढ़ा कि बेसिकली उसमें एक लाइन है कि अ हार्ट अटैक इज 50% लाइक जेनेटिक एंड 50% अ चीज बर्गर. लाइक Yeah. Yeah. Totally. I fully agree. Yeah. आई There is लव another book. दैट Sorry लाइन. to interrupt हाँ. you. There is हाँ. another book called the one that I'm reading right now. It's called Rebuild. It is a really, really beautiful thing. So there's this doctor. He got diagnosed with cancer, and he used um, food as medicine to recover ओह from it. वाओ. So really incredible story, and he goes like in serious details in terms of what food can do to you and how you should build your diet so that you know what you're eating and how you're eating and when you're eating. So I just realized that we usually divide food in three different parts. So we have carbohydrates, we have fats, and we have proteins. And the way you should consume is that you should have proteins first, and you should have fats second, and then you should have carbs, especially sugars and all. तो उसका जो इंसुलिन स्पाइक होता है बॉडी के अंदर, वो बहुत स्लोली होएगा. तो that's a really game changer for me. Another thing that I learned recently is that you're not supposed to have sweeteners, artificial sweeteners. वो गट को समझ में ही नहीं आता कि है क्या चीज, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जो मुझे मालूम नहीं था पहले, अब मुझे पता चला है. आई रिसेंटली अबाउट 5 days back had a terrible allergic reaction, so I had to go to the hospital, get like a get what do you call it, वो steroid का एक बड़ा डोज उन्होंने मुझे लगाया, तब जाके वो मेरा reaction come हुआ, and I was admitted there for I think about like 8, 9, 10 hours, and it took that amount of time for the reaction to really go down. That's when I started reading this book just to understand कि हो क्या रहा है. लेट्स गो डीपर इनटू द टॉपिक ऑफ बुक्स. इन जनरल आप किस टाइप की किताबें, जैसे आपने बताया हेल्थ के ऊपर आपको लाइक किताबें पढ़ना पसंद है, हेल्थ के ऊपर और कौन सी किताबें हैं विच हैव इन्फ्लुएंस्ड यू?
Oh, a lot. Actually, I can open my list Yeah, of please. books. Then we आप can. Kindle पे पढ़ते हैं? मैं पहले Kindle पे पढ़ता था, पर अब मैं I have an app on. It's an iOS app called Books. तो मैं सारी It's also किताबें इसी very पे good. पढ़ता हूँ. Yeah. Yeah. तो ज्यादातर मैं किताबें मेरा दोस्त मुझे भेजता है या मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. So this Rebuild is definitely a really amazing book, which is of course on health, that I read quite a lot. Then there is another book called The Almanac of Naval Ravikant. ये तो Oh काफी famous yes. book किताब है. Yeah. Highly recommended. Very good book. Yeah. उसमें सारे उनके आज तक के जितने इंटरव्यूज हैं सबकी एक लाइक समरी के They've जैसे. sort of analyzed his tweets in a way that kind of is like storytelling, Very nice. Yeah. But no beating around the bush in terms of explaining what those tweets mean. हाँ. यानी एक ही बात को आप अच्छे से समझा दो, उसको 10,000 तरीके से समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ. So they save on time also, and of course it's a really, really good book. Another book that I really would highly suggest is this book called The Psychology of Money. It's a really, really good book. It's a famous book. I think a lot of the people already know about this. One more book is really nice, which I have read just a little bit. I haven't finished it. It's called 12 Rules of Life by Jordan Peterson. Jordan Peterson. Yeah, he's really cool. What else do I have? There's another book, really, really incredible book called Eat Fat, Get Thin. There's a book on gut called Gut. That's really, really heard nice. Of this. Yeah. And it teaches you a lot about like how your gut is like 80% of your immune system. In a case of emergency, when the brain requires like serious horsepower, तो वो gut के साथ direct बात करके like it can take nutrients directly from the gut also, and this shows like how deeply the brain and the gut are like connected, so very, very beautiful book. In fact, for me to treat my allergic whatever problems, I have to fix my gut, which I wasn't aware of. तो मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ, उसके अंदर वो होता है, क्या बोलते हैं, artificial sweetener. So for me to be able to sort of fix that, I have to now find a protein powder that doesn't have artificial sweetener in it. So anyways, yeah. Amazing. Are you also into podcasts? To listen to podcasts? Yeah. Do you like podcasts? हाँ, मैं उतना सुन नहीं पाता जितना मैं सुनना चाहता हूँ, पर कुछ तो मैं सुनता हूँ. There's one guy I have come across that I find very, very interesting. Also because वो the way he does his podcasts, is very interesting because he doesn't take much time. Like he'll take 15 minutes out of your routine. Found it. The Mindset Mentor by Rob Dial. Dial. Sorry, I can't read properly. Anyways, The Mindset Mentor is the name of the podcast. Talks about everything. Mostly about like I think human psychology. How we do what we do, why we do, sort of a situation कि भाई गुस्सा क्यों आता है, how can we control that. आता तो है, वो तो मुझे भी पता है, पर क्यों आता है, so those are the sort of the things. But there are lots of things, man. Like he talks, he's a very clever guy in terms of being able to explain things in a short period of time. Nice. Have you heard the podcast where Naval was the guest, or the podcast he has done himself? Yeah. मैं तो उसका फैन हूँ यार. वो आदमी बहुत मस्त है. बहुत ही cool आदमी है. बहुत ज़्यादा cool आदमी है. My aim is to become like him when I'm his age. जब उसका जो रोगन के साथ पहला जब आया था ना, he had said this one line जिसके बाद से I started taking him very seriously कि if you are so smart, why are you not happy? And I was like, बात तो सही है यार, ये तो बड़ी सही बात बोल दी ऐसे. बिल्कुल पॉइंट की बात कर दी उसने. बिल्कुल सही बात है. हाँ, ध्यान ही नहीं देते. हम भसड़ में लगे हुए हैं, भागते रहते हैं 24 घंटे एक जगह से दूसरी जगह. Yeah, because he had like kind of cracked capitalism game. Then फिर वो दूसरे वाले गेम में आ गया कि okay, like the happiness वाला जो है and the peace वाला जो है, and दोनों में उसकी
कुछ लोगों की पीस और उसकी समझ बहुत अच्छी होती है, बट वो कैपिटलिज्म वाला जो गेम है, मनी वाले उसमें कम होते हैं, जो और वाइस वर्सा ऑल्सो, वो दोनों में बहुत सही है, विच इज वाई इट काइंड, मतलब क्योंकि या बिकॉज ही डजंट हेट मनी एंड ही ऑल्सो सेज कि पहले तो यू विल हैव टू गेट रिच, जो भी चीज है यू नीड टू गेट रिच फर्स्ट, एंड दैट इज रियली कूल। मतलब एक है ना इन जनरल की नहीं नहीं पैसा थोड़ी, मतलब एटलीस्ट मैं जहां से आ रहा था मेरे दोस्तों को ऐसे होता था इंडी ही रहना है, एक वो भी ईगो होती है, नहीं वी नीड टू बी इंडी, वी डोंट नीड टू डू दोस थिंग्स, एंड व्हेन ही स्टार्टेड सेइंग कि first you need to earn money, first you need to get rich to do all these things, that's kind of very cool. Yeah, indeed man, very very cool. मुझे भी मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स पैसा खत्म नहीं कर सकता, आपको पैसा खुश नहीं कर सकता, पर 90% प्रॉब्लम से सॉल्व कर देगा आपकी। हाँ, true. बाकी 10% नहीं कर सकता, पर 10% हम कोई दूसरी जुगाड़ लगाएंगे। Got it. I think in general, I think awareness is आपका very थोड़ा सा आप लाइक sorry. सर, हाँ या हाँ वैसे मेरे सर में बचा कुछ नहीं, बाल झड़ रहे हैं मेरे पर। हाँ, you were talking about the awareness, Yeah, I think in general, no, I think awareness is very important. Just being able to understand कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं क्यों सोच रहा हूँ, you know, खाली उतनी ही समझ आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हम अचीव, it's I'm not at any point of time will I want to say that I know these things already, you know, मैं भी समझ ही रहा हूँ, मैं भी इन चीजों को रोज प्रैक्टिस करता हूँ, किताबों के जरिए प्रैक्टिस करता हूँ, मेडिटेशन के जरिए प्रैक्टिस करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द गुरु मंत्र। आपको when you will be able to understand your own emotions, it becomes very easy to dissect things and go to the point that has all the answers for you, you know. तो जैसे मुझे पता ही नहीं था कि I was so deeply patriarchal, तो हमें लगा कि हम तो बस हम ही हैं, you know. And then when I went into therapies, when I realized how deeply I was patriarchal, and it took me a long time to move out of it. And still there are episodes where I will say something and my wife will be like, देखो time तो लगेगा इसको निकलने के लिए, you know. You're not the only one, like a majority of the men are raised like that, and majority of them are not even aware that they are patriarchal. So it's a very बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज है, यू नो, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली, इट्स लाइक गोइंग टू द जिम। अगर आप 4 दिन जिम ना जाओ तो आपको महसूस होगा कि आज मैंने जो मेहनत की थी मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है, यू नो। मेडिटेशन इज एग्जैक्टली दैट, यू नो, कॉन्स्टेंटली कीप थिंकिंग अबाउट things that you can improve on. If you stop it for a while, I'm not saying become compulsive, you know, but you have to engage in like a process where you can learn कि हाँ भाई ये हो रहा है मेरी जिंदगी में, you know, ये मेरी सोच बदल रही है, मुझे शायद ऐसी सोच नहीं रखनी है, you know. जैसे दिल्ली का कल्चर बहुत अलग है, बॉम्बे का कल्चर बहुत अलग है, गोवा का तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे गोवा में लोग दोपहर को दुकानें बंद कर देते हैं, you know. अभी आप कहाँ पे हैं? मैं गोवा में ही रहता हूँ। Okay. Yeah, can I quickly close this window so that my dog who's going crazy, I will not have to hear it. Amazon? Bhaiya, Amazon? You know, it's a rare occasion to find delivery guys coming to our place in Goa. क्योंकि हमारा घर इतना ज्यादा दूर है कि यहाँ पे बहुत कम आते थे से आए तो हमारी जिंदगी It's very rare. Anyways, yeah. अभी मेरे को एक नई थ्रेड पकड़ना था यहाँ से, because when you walk there, like I just noticed something. Are you wearing an UltraHuman patch? Oh, this guy. Yeah. क्योंकि इंसुलिन की बात कर रहे थे ना, तो मेरे को एकदम से the insulin spikes. Is it like something that you are liking? मतलब कि जो बताता है ये चीजें. I think it's game changing. I think this is something that should eventually become so cheap that everybody can use it, because what happens is that once you wear it and it tells you what is your glucose level, that helps you understand what you should eat and what you shouldn't eat. You know, तो मेरा चावल से होता है इंसुलिन स्पाइक, मुझे पता ही नहीं था। पराठा खाने से मेरा स्पाइक होता है, हनी से नहीं होता, you know, which is very weird.
तो मैं like I actually want to make like a nice proper video about what this product can do and why it is important. So I read about health also in terms of understanding where is health going. You know, how is one going to stay healthy in say 20 years from now? You know, Right. I think the way the medicines will be given to patients will completely change. You know, आपके इतने सारे बायोमार्कर्स हैं, वो आपका कोर्टिसोल भी चेक कर रहा है, आपका इंसुलिन भी चेक कर रहा है, आपकी डेफिशिएंसीज भी चेक कर रहा है, बोल रहा है भाई तू ये दवाई खा रहा है, वो सबके लिए बनी है, 50 करोड़ लोगों के लिए, तेरे को उसकी जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए स्पेशल दवाई बनाता हूँ. And there will be a machine where you punch in all the data, you press the button, and it will give you the medicine that your body really needs. You know, and it will be cheap. You know, because maths is done in the computer. You don't really need to do anything. All you need to do is just, this is data, this is gold. I was doing an episode with Tanmay Bhatt, and he was also talking about the UltraHuman Patch, and he said he gave a YouTube analogy. Basically, he said UltraHuman Patch is like YouTube Studio for your body. Like yeah. You get the analytics. मेरे को लगता है आपने भी वो एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आपने बताया ना एक ऑर्डर होता है, फर्स्ट प्रोटीन्स, द एंड में कार्ब्स, उसके हिसाब से. सो ये आपको पहनने के बाद आई थिंक वो चीज आप देख पाते होगे लाइव कि ओ शिट, लाइक इफ आई डू इट लाइक दैट, इट एक्चुअली इज लाइक दैट. Yeah, and another thing that I've noticed is that कि मैंने खाना खा के मैं बैठा रहता हूँ, at least around, अब एसी चालू है, मैं थोड़ी ना धूप में बाहर जाऊंगा, you know, तो मैंने खाना खाया, हम लेट हुए आराम से, तो वो जो स्पाइक होता है इंसुलिन खाना खाने के बाद, वो काफी देर तक सस्टेन रहता है. पर अगर मैं खाना खाने के तुरंत बाद अगर 20 मिनट भी चल लिया, तो वो स्पाइक फटा करके नीचे आ जाता है. Got it. That's unbelievable. That's so cool. That means that after you eat your meals, you should have a quick walk. Very nice. I think since we are talking about products, one thing that I ask all my guests is a product that you bought for less than 10,000 rupees, which you would recommend to everyone that they should invest in, which made your life better, or this is an investment you should totally do. Everything has become very expensive now, unfortunately. But I think some sort of a tracker will be like, for example, heart rate tracking on the Apple Watch is really incredible. You know, I wear it for that reason. Sleep tracking is really good on this one, the Fitbit. So sleep tracking is unbelievable on this. Apple वाली वॉच में भी तो स्लीप ट्रैकिंग होती है, इज इट नॉट दैट गुड? इसमें मुझे ज्यादा एक्यूरेट लगता है. होगा इसके अंदर, मैं पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग ज्यादा प्रेफर करता हूँ. इसका हार्ट रेट मॉनिटर मुझे इतना सही नहीं लगता जितना इसका लगता है. You know, so you wear both. Nice. मैं दोनों पहन लेता हूँ. Yeah. So I think some sort of a actually I will recommend that you find some sort of a step tracker. You know, आप पहनो और आप रोज कम से कम 8 से 10,000 steps करो. I think that's a really good way to move toward a healthier thing. Another thing that I can really recommend is investing in books. That I think is like so, like in Naval Ravikant's that book I was reading, उसमें एक जगह पे लिखा था कि people who read 1 hour every day, they fall into the category of 0.00001% of the people in the world. You know, and Naval Ravikant still reads, and he's been reading ever since he was a kid. वो लाइब्रेरी में ही बैठा रहता था, क्योंकि उसकी मम्मी के पास टाइम ही नहीं होता था, वो बेचारी नौकरी करती थी इतनी, तो स्कूल लेने जा नहीं पाती थी उसको, तो उसको बोलती थी कि बेटा तेरा स्कूल के बगल में जो लाइब्रेरी है वहां जाके तू बैठना, मैं अपना काम खत्म करके तुझे लेने के लिए आऊंगी. You know, and all this time that he had, he would just choose a book and just keep reading. You know, and I think my life also drastically changed ever since I started reading. You know, I started with self-help books, then I moved into health. Now I read about like whatever I find interesting, honestly. This is very nice. And you know, can I quickly also talk about self-help here? Because for me, every book is a self-help book. मेरे को बड़ा पसंद है the how-to books और ये वो. But
people look down upon self-help books. अरे तू self-help पढ़ रहा है, and I पागल really है क्या? hate that. ऐसे ही बोलते हैं सब लोग। अभी आप हाँ थेरेपिस्ट के पास भी चले जाओगे तो लोग यही बोलते हैं ना कि तू थेरेपिस्ट के पास जो पागल हो गया है, कुछ तो दिमाग खराब है इसका, बट दैट्स अ ओल्डर पर्सपेक्टिव। आई डोंट थिंक यंग पीपल थिंक लाइक दैट। पुराने लोग अभी भी उस तरीके से सोचते हैं। थेरेपी का आई थिंक थोड़ा कम हो गया है. लाइक पीपल लाइक आर ओके विद थेरेपी इन द यंगर जनरेशन आल्सो, बिकॉज मोस्टली पीपल आर टेकिंग थेरेपी दीज डेज एंड लाइक इट्स नाइस. सेल्फ हेल्प को लेके अभी भी देयर इज अ टैबू कि अरे यू आर रीडिंग दिस, सो बेसिकली. और रीडिंग कम्युनिटी में भी ना लोग थोड़ा इसको ऐसे लेसर आर्ट फॉर्म के जैसे देखते हैं अच्छा, कि हाँ इट्स बैड. एंड ओके। और मेरे को हमेशा गुस्सा आता है. आई हैव आल्सो मेड सम वीडियोस ऑन द चैनल वेयर आई एम रिकमेंडिंग बुक्स. मेरे को इमोशंस के बारे में जितने फंडे पता चले हैं, साइकोलॉजी के बारे में जितने पता या चले, मेरे को मैन, सब इट्स सेल्फ हेल्प गुड। से पता चला है. सब सेल्फ हेल्प सेम से हियर, पता चला. एब्सोल्युटली सेम हियर। आई थिंक एनी नॉलेज इज गुड नॉलेज। आपको जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, आपको उस चीज की जानकारी करनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और वो 10 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि पैसा पैसा बनाता है, तो हम उस पैसे को सही जगह पे लगाएंगे तो वो पैसा पैसा बनाएगा। तो आपको अगर उसके बारे में पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे, है ना, कि ट्रू भाई आप बताओ कि भाई बैंकर हो ट्रू. गया या इन्वेस्टमेंट कुछ तो भी गुरु हो गया, कोई तो होगा जिसके पास आप जाओगे। हाँ फिर आपको बताएगा भाई यहाँ पे इतने पैसे लगाओ, यहाँ पे इतने पैसे लगाओ, सब एक जगह पे मत लगाओ, थोड़ा क्रिप्टो में भी ट्रू. लगा दो, थोड़ा यहाँ पे भी लगा दो, और उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर दो। व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, हम बस अपने दिमाग में घूमे। जाओ ना आप किसी प्रोफेशनल के पास। अगर आप नहीं एब्सोल्युटली. जाना चाहते तो आप किताबें पढ़ो कम से कम, तो आपको पता तो चलेगा ना अपने बारे में। या यू या नो व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड इन इंग्लिश? कहीं का गुस्सा कहीं और, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशंस, कि डिस्प्लेसमेंट. या हाँ, कि हम इस चीज से गुस्सा थे पर हम गुस्सा निकाल इस चीज के ऊपर रहे हैं, या और हमें पता ही नहीं उस चीज के बारे में। अब आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप किसी के पास जा नहीं रहे हो। पैसे को या हम जिस नजर से देखते हैं उस नजर से हम अपनी इमोशनल हेल्थ को नहीं देखते। यू नो शादी को भी उस नजर से नहीं देखते। यू नो अगर बोल दिया किसी ने तो हमने कर ली शादी। खैर younger people are very clever now, thankfully, but in older days it wasn't like that. you know 10 रुपए अगर किसी को देने तो 10 बार सोच के देगा इंसान, पर बेटी ऐसी हाँ. मेरी समस्या तेरी समस्या ले जा बेटा, which is very like it's fucked up in many ways. मैं थेरेपी के बारे में जैसे एक चीज जैसे हम बात कर रहे हैं लाइक इमोशन प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए. एवर सिंस आई स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी, वन गुड थिंग दैट हैपेंड वाज, मेरे को लगता है हम हमारे फ्रेंड्स को सूडो थेरेपिस्ट के जैसे यूज करते हैं कि उन्हें जाके सब बता दिया, उनसे कर लिया, उनसे पूछा भी नहीं और उनको जाके 1 घंटा रैंट कर दिया. राइट, यूजिंग देम और दे माइट बी ओके विद इट, बट आई डोंट थिंक इट्स हेल्दी. एवर सिंस आई स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी वो स्पिलिच कम हो गई कि कहीं की बात कहीं नहीं की. वो मैं फिर वेट करता हूँ कि मेरे नेक्स्ट सेशन में जाके बात कर लूं, क्योंकि कभी कभी हम अपने दोस्तों से बात ही नहीं करते, वो बस वन साइडेड मोनोलॉग्स होते हैं. या और हमारे अच्छे दोस्त होते हैं तो वो सुन भी लेते हैं, बुरे वो दोस्त सुन भी होते हैं लेते हैं, तो वो बोलते हैं भी नहीं हाँ, वो बोले है. बौक ले, तू कर ले, खत्म कर ले। हाँ, तेरा जब खत्म हो जाए तब हम काम करेंगे फिर। एनीवेज, आई थिंक you're right. दैट इज द थिंग, हमको क्विक फिक्स मिल रहा है उस चीज का, हाँ तो हम वो क्विक फिक्स से ही काम चला रहे हैं। हमको नजर नहीं आता कि अम, इस चीज को ना ट्रीट करने का नुकसान कितना है। ट्रू 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 you ट्रू know ट्रू. when you meet someone who's very successful, when you meet someone who's very wealthy, who's very creative, whose life is with least amount of hurdles, तो उसकी सोच भी वैसी ही होती है। ट्रू It ट्रू. doesn't take time for him to say no, you know पर हम मना करने के लिए 10 बार झिझकते हैं कि यार उसको बुरा ना लग जाए। you know अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। किसी को मना करना इज नॉट अ बैड थिंग, लाइक अ लॉट ऑफ द टाइम्स दिस हैपेंस विद द आर्टिस्ट कम्युनिटी। आई हैव सीन क्वाइट अ लॉट, that I recently was talking to this really dear friend of mine. He made a beautiful song, very beautiful song. तो उसने मुझे गाड़ी में सुनाया, मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उससे बोला कि ब्रो ये गाना तो बहुत अच्छा है पर ये वोकलिस्ट तेरे को चेंज कर देना चाहिए। बोलता नहीं यार, मैंने उसको बोला कि आवाज चेंज कर दूंगा तो मेरा खून कर देगी वो। ब्रो ये कहाँ का लॉजिक है? I don't understand this. Like, this is your song.
and it is not working the way you want it to work. True. So you're saying, I'm going to remove this voice from this song and I'm going to put somebody else's voice on this. That doesn't mean that their voice is bad. It's the combination of two doesn't sync together. You know, वो गाने की सोच और वो उस आवाज की सोच मिलती नहीं है. You know, तो चेंज कर दो. What is wrong in that? You know, तो हमें झिझक महसूस होती है उस चीज में. Are you good at taking feedbacks? I would like to believe I'm really good at it. No, I'll be very honest with you. What happens is that मैं ना फिल्म इंडस्ट्री में काम एक रीजन की वजह से नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे मेरा क्रिएटिव फ्लो बहुत ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. You know, क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूँ ना, तब मैं इस तरीके से काम करता हूँ कि ये जहां पे जाएगी मेरी सोच वहां जाने दो, मैं नहीं रोकूंगा उसको बिल्कुल भी. You know, गलत पहुंच गया तो बात अलग है, पर गलत पहुंचने के बाद भी मुझे पता चलेगा कि शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए था, अगली बार नहीं करूंगा. You know, but I will never stop myself creatively. Whichever direction it goes, just let it go. That the person has to understand from my perspective, the one who's giving me the feedback, that why did I go there? What was I trying to achieve? You getting my point? A lot of the times people don't understand that. तो मुझे तो कई बार बोलते हैं कि जैसे मेरे अपने जो दोस्त है ना, जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं, जो मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, जिनको मैं अपने खून का ही मानता हूँ ऑलमोस्ट, यू नो, कि वो उन्होंने जो बोल दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकड़ी टाइप है. वो लोग मेरे से झूठ नहीं बोलते, वो मुझे बहुत पसंद है. तो अगर मेरा गाना उनको अच्छा नहीं लगा तो वो मुझे बोल देते कि मुझे गाना अच्छा नहीं लगा. तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि गाना अच्छा नहीं लगा वो मुझे चलेगा, पर गाना क्यों नहीं अच्छा लगा वो बताना बहुत जरूरी है. यू नो, तो बोलेंगे भाई ये बात नहीं थी उस गाने में. उनका क्या बात थी वो बात बताओ मुझे. यू नो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो फिर वो बोलेगा कि भाई देख, इसके अंदर ये वाली जो जगह है ना, इस वाली जगह में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी खिचड़ी पक गई. यू नो, नाउ इट मेक्स सेंस. Now it makes sense. Now it makes sense. So whatever feedback you're giving, no, be able to give feedback in a way where the other person can use it. Absolutely. वो वन लाइनर्स जो होते हैं ना फीडबैक में, he didn't like it, like वो they don't do justice, right? So I also direct, मेरे को ना डायरेक्शन का मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ. तो जब भी मैं किसी को मेरा कोई काम भेजता हूँ, मतलब मैं क्वेश्चनएयर भी भेज देता हूँ कि जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. एक लाइन भेज दोगे तो उससे मैं हो सकता है मैं इट कैन डीमोटिवेट यू लाइक एनीथिंग, कि नहीं पसंद आया क्या है वो, फिर मैं मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा पे ले जाऊंगा कि मैं इंसान ही अच्छा नहीं हूँ. राइट. नो, इट कैन ट्रिगर, एंड स्पेशली व्हाट हैपेंस विद आर्टिस्ट्स इज के उनके ऑलरेडी बहुत सारी अनसॉल्व्ड चीजें हैं मन में, जिनको वो फ्यूल की तरह यूज करते हैं म्यूजिक बनाने के लिए. तो अगर कोई आके उसमें उंगली कर देना तो बहुत बुरा लगता है. यू नो, तो आप उंगली करो, मुझे तकलीफ नहीं है, पर आप उंगली इस तरीके से करो कि मुझे समझ में आपने क्यों की. बिल्कुल. यू नो, ताकि अगर ऐसी कोई चीज है जो मैं सुधार सकता हूँ तो मैं कम से कम उसको सुधारूं तो सही. तो आपका फीडबैक मेरे काम में आया. We agree there. And can I recommend you something? एक किताब की recommendation है मेरे पास. It's a book on writing. It's called Zen in the Art of Writing. ये रे ब्रैडबरी मेरे favorite author है. Fiction ऐसे पकड़ो, चेंज मत करना उसके बाद. हाँ, अब ठीक है. Yes. Zen in the Art of Writing एक ये किताब है. So I actually like happy artists. मैं जितना पिछले वो किया ना, मेरे को टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है. मैं बिलीव नहीं करता बेसिकली. मेरा तो ये बिलीव नहीं करता. वेरी गुड. तो ये बहुत ही हैप्पी आर्टिस्ट है और ये बोलता है कि जो भी आपको कह रहा है कि राइटिंग के में पेन है, सैड है, वो लाइक इनकी बात मत सुना करो. सो ही हैज अ चैप्टर इन इट कॉल्ड फीडिंग योर म्यूज. एंड आई काइंड ऑफ जो भी हमने बात की कि हाउ टू लाइक फीड योर म्यूज करके एक चैप्टर है इसमें. बेसिकली म्यूज कोई महिला नहीं होती जिनको आप लाइक देख के आपको आइडियाज आ रहे हैं. इसका मतलब है कि म्यूज आपकी सबकॉन्शियस होती है. सो इसने इस पे एक चैप्टर लिखा है कि आप अपनी म्यूज को फीड करने के लिए एक तो ट्रैवल करते रहो, नई किताबें पढ़ते रहो, नया मूवीज देखते रहो, लिखते रहो. एंड अगर आपने अपने म्यूज को एक भी दिन फीड नहीं किया ना तो आपकी म्यूज आएगी नहीं. राइट. ऑल द राइटिंग इज अबाउट कि आप बैठे और फिर वो चीज आ जाए. एंड अगर वो नहीं आ रही तो बेसिकली यू हैवंट लाइक फेड द म्यूज. राइट. It's a beautiful concept. Beautiful. Thank you, man. I think the best gift a human being can give to another human being is
the right recommendation of books. Cheers man, thank you. मेरे को बस ऐसे लगा, हम बात कर रहे थे ना उसकी स्टार्टिंग में भी बर्नआउट वगैरह वाली, आई थिंक इवेंचुअली एक तो वो होता है कि मेन स्ट्रीम म्यूजिक है या कि रेपिटेटिव है, अब अच्छा ही बनाना है, इवेंचुअली दीस पीपल स्टॉप फीडिंग देयर म्यूज, राइट? क्योंकि एक तो ये कॉन्शियस भी हो गए हैं कि अब अगला क्या, मतलब कि अब फेमस होना ही है, बट आई क्योंकि रेपिटेशन के चक्कर में देयर म्यूज इज नॉट गेटिंग फेड, राइट? बाय दैट आई मीन द सबकॉन्शियस. Yeah, totally man, I fully agree with you on this. वो जो खोज है ना, उसमें वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है. अब आपने ये किताब का जिक्र किया है, अब जितने लोग भी इस किताब को देखेंगे पढ़ेंगे, they will go a step closer to be able to finding it, you know. कि अब मुझे पता चल गया कि ये था, you know, अब मैं वो सारी चीजें करना शुरू कर दूंगा, तो जो गाना मेरा 1 साल में बनने वाला है वो मेरा 1 महीने में बन जाएगा. Absolutely. You know, and that is the real like इस चीज के तो पैसे मिलने चाहिए, you know. कि मैंने आपके 11 महीने बचाए हैं. हमारा पूरा चैनल ही इसी में बेस्ड है कि ये सही चीज बताएगी. ब्यूटीफुल मैन, दैट्स अमेजिंग. ये आपको कब पता चला था लाइफ में कि टूटे हुए दिल से संगीत नहीं निकलता है? वो वाले फंडे कब ठीक हुए? या जो भी आपने क्योंकि संगीत नहीं निकला. नहीं, एक्चुअली जब तक टूटा नहीं था तब तक बहुत अच्छा चल रहा था. और टूटने का मतलब ये नहीं है कि लड़की का जिक्र हो, टूटते बहुत तरीके से हैं दिल. तो a lot of things that happened emotionally in my life in past 4-5 years that kind of changed the perspective. तो मैं पहले जब म्यूजिक बना रहा था, जब मैंने कूचा मोस्टर रिलीज किया था, जब मैंने बेस रानी रिलीज किया था, I was in a state where I genuinely did not give a fuck. मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो. मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने नंगे पांव भी स्टेज पे चढ़ के शोज बजाए हैं. मैं बिना नहाए भी स्टेज पे चला गया हूँ शो बजाने के लिए. मैं शोज बजाने से 2 घंटे पहले नीचे सो रहा हूँ, लिटरली, यू नो. अभी मेरा मैनेजर आके मुझे जगाता कि भाई तेरा नंबर आ गया, जा बजा जाके शोज, यू नो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? आई जेन्युइनली डिड नॉट केयर, यू नो. And then that kind of started changing slowly, you know, and that kind of started hampering my life. And I started doing way too many shows. यानी मैं 150-200 शोज में हर साल बजा रहा हूँ. यानी एक होटल रूम से दूसरे होटल रूम से तीसरे होटल रूम तक, बस वो यही चल रहा है, यू नो. घर नहीं है तो आप वही होटल रूम में ही जी रहे हो. कितनी बार ऐसा होता था, हम एयरपोर्ट पहुंच के फिर हम बोलते थे भाई टिकट कहाँ जाना है, याद ही नहीं है कहाँ जाना है. फिर ये रियलाइज नहीं होता था कि हम कहाँ हैं. फिर उससे पूछते थे टिकट वाले से, भैया क्या हो रहा है, क्योंकि you're sleep deprived, you're burnt out, you don't know what the hell is going on, you know. You're operating at autopilot, like autopilot in a way, like 20% efficiency, you know. वो 80% सब आप ही ने वेस्ट कर दिया है, you know, by just burning yourself out. That's why you will see that a lot of the artists, they travel with like an entourage. ये वाला काम तू संभालेगा, ये वाला काम तू संभाल, ये वाला काम तू संभाल, ये वाला काम तू संभाल. तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं करेगा बेटा. कुछ नहीं कर रहे हो, you know. म्यूजिक भी नहीं बना रहा अब तो. anyways, so for me it took a long time to realize that what I want to become now is what I was about 10 years back. Where dude, like if I may, like मतलब feedback नहीं है, कुछ नहीं है. My favorite album of yours till date is Koocha Monster, so I would love to see another Koocha Monster. Yeah. See, you will be able to notice that in Koocha Monster everything sounded very different. Very different. हाँ, उस जैसा दूसरा कुछ था नहीं उस वक्त, you know. जैम रॉक उस जैसा कहीं नहीं था, न्यू दिल्ली नटा नहीं था, और अकड़ बकड़ नहीं था उस वक्त, you know. And what happened was that formula I used. मुझे बहुत टाइम लगा वो फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए, you know. I was part of Bandish Projekt, and then with Bandish Projekt I was running for almost like 10 years. फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैंने न्यूक्लिया शुरू किया, उसमें भी मेरा कुछ नहीं हुआ. फिर एंड में मुझे बहुत शिद्दत से मुझे ये फॉर्मूला मिला कि ये कुछ नया है, you know. इसको मैं इस तरीके से पेश कर सकता हूँ कि पब्लिक को समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, you know. And then I used it. And then I used the same formula again in Bass Rani. I tweaked it a little bit, but it's the same formula. It's different sounds. It's the same formula. It's the same formula. And then the last 2 or 3 albums, I'm trying to find a new sound. If you will see, मैं कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ. किसी गाने में मुझे मिल जाता है, किसी गाने में मुझे नहीं मिलता, you know.
कोई गाना जैसे मुझे लगा भयानक आत्मा में मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ हाँ रहा था, हाँ 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 यू नो हाँ हाँ बकर बकर में शायद मुझे मिल गया मैं हाँ जो ढूंढ रहा था, हाँ। पर कई सारे गानों में मुझे नहीं भी मिला, यू नो। ट्रू। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नया है जो मैंने पिछले 5 साल में शुरू किया है, जो मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल अलग है, ये मैंने ऐसा पहले काम नहीं किया, यू नो। इस काम करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, कुछ तो भी नया है, क्या है मुझे भी नहीं पता। सो दैट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी कि पता नहीं पब्लिक को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, यू नो। फेयर बट आई इनफ। ऑल्सो नो दैट इफ आई विल नॉट पुट इट आउट देन मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा फेयर कि इनफ। मेरे पास टाइम था, मौका था, और मैं अब उस लेवल पे आ चुका हूँ कि यहाँ पे तो आके मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है। ट्रू ट्रू। डू यू हियर दिस अ लॉट, लाइक जैसे मैंने बताया कि कूचा मॉन्स्टर इज द फेवरेट एल्बम, या लोग बेस पोस्ट, क्योंकि आई थिंक यू गॉट वेरी फेमस पोस्ट बेस रानी, आई थिंक जो एक्चुअली हुआ था। या तो डू यू हियर दिस अ लॉट वेयर पीपल से कि यार, बिकॉज मैं ये नॉस्टैल्जिया वाले वे में नहीं कह रहा हूँ कि अरे यार वो पहले वाला पसंद है, मेरे को एक्चुअली कूचा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सम पीपल जस्ट से, हाँ, तो डू यू हियर दिस अ लॉट वेयर पीपल टॉक अबाउट कूचा मॉन्स्टर लाइक दिस? very few of them, but whoever talks about it, I know where they're coming from, you know। हाँ। मुझे पता है क्योंकि वो उस एंगल से सोचते हैं जिस एंगल से मैं हम्म सोचता, जब मैं सोच रहा था, जब वो मैं एल्बम बना रहा हम्म था, कि ये हम्म ऐसा नहीं था पहले, यू नो, ये हम्म। कुछ बिल्कुल ही अलग ही था, कुछ नया ही था जो मैंने पहले हाँ सुना ही नहीं था, यू नो। हाँ एंड व्हेन दैट हैपेंस इन योर लाइफ, इट टेक्स यू लाइक विद अ कि फक, ये क्या था यार, ये कुछ नया ही था, यू नो, गूज़बम्स हो बिल्कुल। रहे हैं मेरे को। यहाँ पे पर एक, ज्यादातर या ज्यादातर प्लीज लोग प्लीज। मुझे वो उन गानों के लिए याद करते हैं जो गाने फेमस ज्यादा हुए हैं। मुझे हम्म मुझे ऐसा लगता है कि माय मोस्ट क्रिएटिव वर्क इज where I, like for example, I made a song with Chinna Ponnu that I thought was really nice. You know, at the time nobody was experimenting so much with Tamil music. तो वो मैंने बहुत ट्राई किया था, पर वो गाना लोगों को समझ में नहीं आया। एक तो लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि वो तमिल सब लोग बोलते नहीं है इंडिया में, बट लॉन्गवाचा वर्कड। सो आई एम लाइक कि पंजाबी भी तो नहीं बोलते ना सब लोग, पंजाबी भी तो कम ही लोग बोलते हैं ना, पर वो कैसे चल गया, you know? ट्रू। So there is no, I don't think there's any right or wrong way to do anything. There is always a sure shot formula that you will have that you can use and you know for a fact that it will work. आपका काम है काम करना और म्यूजिक रिलीज करना, और उसका क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो वहां उसी वक्त से आप अपने आप को डिसोसिएट कर लो उस काम से, यू नो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, और जो काम आप कर रहे हो वो आप शिद्दत से करो, यू नो, वो वेरी सच्चे मन से नाइस। करो। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मन में चल रहा है कि फक, ये चलेगा कि नहीं चलेगा यार, शिट, इसमें तो मुझे कोई बड़ा आर्टिस्ट लाना पड़ेगा, अगर ये बड़ा आर्टिस्ट नहीं लाया तो ये एल्बम नहीं चलेगी, यू नो। लुक एट माय प्रीवियस वर्क, हाउ मेनी बिग आर्टिस्ट डू आई हैव ऑन माय एल्बम? वेरी फ्यू, very few. Longavacha, I worked with Avneet Kurmi. She probably did not have any big releases, but her heart was in the right place, you know, and I would feel it. She sung that song from her heart, you know. The some formula somewhere was right, and it worked. We were both honest. And the same thing works with a lot of the other songs as well. That doesn't mean कि आपको कोई बड़ा artist एक गाने में बैठाना ही पड़ेगा. Go back in like 2 months and see all the big releases that were out there. And you will realize that they just sound like typical या pop songs, you know. या 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 तो वो कुछ जुगाड़ में गड़बड़ हो जाती है, सच्चे मन से या बनाना चाहिए। मैं भी प्रयत्न करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता मेरे मेरे गाने ही सबसे अच्छे गाने हैं, but I also try to be as honest with my work as I possibly can, and as ballsy also, कि आप वेरी हिम्मत से नाइस। करो ना, देखो ना क्या होगा, वो रिलीज तो करो पहले कम से कम। मेरे को आई रियली लाइक द सेल्फ अवेयरनेस यू हैव अबाउट इट। मैं यहाँ पे, माय ऑल टाइम फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आर्टिस्ट इज जॉन हॉपकिंस। सो जॉन हॉपकिंस का, जैसे ना आपने जो कूचा मॉन्स्टर और बेस रानी जैसे बात की ना, मेरे को उनका ये लगा, माय फेवरेट एल्बम ऑफ हिज इज इम्यूनिटी, जिसमें कोलाइडर, हैव यू हर्ड लाइक हिज म्यूजिक, जॉन I हॉपकिंस? think so, yeah. He does 4x4 music, no, but it's slightly more melodic, I think. हाँ 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 हाँ, इट्स मेलोडिक Yeah, ओनली। अभी वो yeah. थोड़ा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन म्यूजिक में जा रहे हैं। Right. उनका एक सॉन्ग है कोलाइडर, और लाइक ये सारे गाने मेरे को बहुत पसंद है। फिर इनकी एक एल्बम है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी इज इम्यूनिटी बट लाइक ट्वीक्ड इम्यूनिटी। अब सबको वो सिंगुलैरिटी की वजह से पता है कि भाई ने क्या मचा दिया, बट आई एम लाइक,
मतलब मेरे को इतने पसंद है, मेरा दोस्त सिंगापुर में उनका कॉन्सर्ट अटेंड करने गया था, मैं पूरे टाइम लाइक ऐसे 5-6 FPS पे वो गंदे से नेटवर्क पे वीडियो में देख रहा हूँ कि मेरे को जॉन हॉपकिंस देखना है। एंड आई एम लाइक कि यार बट इसने मेन तो बजाया ही नहीं यार, मतलब जो जो जिसकी वजह से मेरे को ये पसंद है, एंड पीपल आर लविंग इट बट दे डोंट नो कि एक्चुअल क्या था। तो मेरे को वो बेस रानी कूचा मॉन्स्टर में एग्जैक्ट वो चीज लगी थी कि एवरीवन लव्स यू for like Bass Rani, which is not wrong, but I just hope people also go back to the main one. Yeah. See, but that is where your personal taste also comes into place. Like आपका personal taste और मेरा personal taste मुझे लगता है कुछ हद तक मिलता है, इसलिए आपको भी ऐसा लगता है कि कूचा मॉन्स्टर में जो काम था वो काम दूसरे एल्बम में नहीं था। मुझे भी ऐसा महसूस होता है, पर मैं अपनी जगह पे बैठ के ये चीज डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मेरा बेस्ट काम कूचा मॉन्स्टर में ही था। और उसके बाद जो मैंने काम किया वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। यू नो, आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग दैट आई कैन मेक अनदर कूचा मॉन्स्टर, यू नो, दिस इज द प्रोसेस। तो कुछ जैसे आप बोल रहे थे ना कि मैं एक बार मेरा मेरा फेवरेट आर्टिस्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में है ट्रेंट मॉलर। आई थिंक इज डेनिश इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं एक बार लंदन में था तो मुझे मौका मिला था शो देखने का उनका। तो मैं गया वहां पे शो देखने के लिए और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया था पहले 30 मिनट्स के लिए, यू नो, क्योंकि मैं जो मन में सोच के गया था वो 20x था और जो मुझे देखने को मिल रहा था वो 20x नहीं था, यू नो। और मैं अपने मन से जो देख रहा हूँ वो तो एक ही पर्सपेक्टिव है ना। वो जो दिखाना चाहता है मुझे वो मैं देख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। तो halfway through the set, when I really understood what he was trying to do, I had goosebumps constantly on my neck कि मेरी फटी रही है उनका, fuck ये इंसान कैसे कर सकता है यार, इतना अच्छा काम कोई कैसे कर सकता है। Until date I love that guy, you know. It's just that we sometimes don't understand what the artist is trying to say with his new work. A lot of the times that happens because we don't move away from our perspective. We think that मेरे को तो पता चल गया ये वाला है, और ये मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि it's a very common thing amongst a lot of the people, you know. जैसे हरिहरन and Leslie Lewis, they long time back made this album where they did a lot of these compositions which were a mix of like pop music and ghazal gaiki and different time signatures were there, and it was a very new thing, you know. And when you listen to that album it feels like wow man, like मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं है, किसी ने इतना इतना अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं किया म्यूजिक का, you know, where you listen to it and you connect with it and you also understand the art behind it, पर फिर उन लोगों ने किया ही नहीं, you know. And then it feels like कि अच्छा तो अब क्या, you know, you're on sugar rush. इससे भी बेहतर करो, इससे भी बेहतर करो, वो होता नहीं है। That is not humanly possible. True, you know? true. अगर एक एल्बम अच्छी निकली है consecutively आप 5 अच्छी एल्बम निकाल सकते हो? I don't think so. It's not possible. Not in the span of time that people are releasing music right now. It's not possible. आप consecutively दूसरा गाना हिट कर दो, वही बड़ी बात है। True. This is reminding me of this quote which has like really helped me on the artistic journey. It says कि they are going to crucify you if you change. They are going to crucify you if you don't change. So, but I would rather be changing. दोनों ways में आपके लगने तो है। They are going to hate you. Change होगे तब भी, नहीं होगे तब भी. What do you think? Yeah, that's why you have to disconnect. Right. That's why you have to disconnect. अब जैसे मैं जब म्यूजिक बनाता हूँ तो मुझे अपना सबकॉन्शियस सेटिस्फाई करना है, क्योंकि वहां से ऑनेस्टी निकलती है ना। और अगर मैंने वो सच्चाई से किया है और आपको वो सच्चाई नजर आ गई तो आप मेरे फैन हो, राइट। और लेट मी रिफ्रेज, आप मेरे म्यूजिक के फैन हो। क्योंकि अगर मैं म्यूजिक निकाल दूंगा तो कुछ बचा नहीं है आपका मेरा फैन बनने के लिए, है ना। तो इसलिए डिस्कनेक्ट होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आपने कुछ बनाया, आपने रिलीज किया, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ उससे, यू नो। नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ न्यू ट्रैक और अ न्यू प्रोजेक्ट और अ न्यू समथिंग एल्स, यू नो। वो कमेंट्स आपने पढ़ लिए,
आत्महत्या है फिर तो वहां पे कुछ बचने वाला नहीं है। मेरे को एक और चीज आपसे पूछनी थी। सो देयर इज दिस म्यूजिक आर्टिस्ट, उनका नाम है ग्राइम्स। बहुत प्यारे शानदार गाने बनाती है, बहुत डिफरेंट उनका स्टाइल है। वो इलॉन मस्क की एक्स पार्टनर भी है। एंड लेक्स फ्रीडमैन एक और पॉडकास्टर है जिसके पॉडकास्ट पे आई थी, ही इज माय फेवरेट पॉडकास्टर। वहां पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वो ना जबरदस्ती ऐसा म्यूजिक सुनती हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज शी ट्राइड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्रू इट, कि सो दैट मेरे को समझ आए कि दुनिया वाले कैसा म्यूजिक सुन रहे हैं, कि गंदा क्या है, ये क्या है। मतलब वहां पे वो इतना खुद को डिस्कनेक्टेड रखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड ओके ट्रेंडी क्या है, व्हाई इज इट वर्किंग, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। बिकॉज लाइक आई सेड कि जैसे हम लोगों को पसंद है कि ओके आई एम अ कूचा मॉन्स्टर गाय, बट शी puts herself every day or every week to listen to music which is not her style, so that like just to keep that like neuroplasticity thing going, कि ओके कि यार माइंड ऐसे ना स्टिफ ना हो जाए कि मेरी मेरी इतनी ही समझ है। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट, नॉर्मली नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ मेरे को अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, लाइक मेरे को नहीं, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन इन जनरल ऐसा करना चाहिए। हाँ मैं ऐसा इन जनरल करता हूँ। हाँ 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 कि मुझे साउथ इंडियन म्यूजिक भी सुनना है, मुझे नॉर्थ इंडियन म्यूजिक भी सुनना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी सुनना है, मुझे हिप हॉप भी सुनना है, मुझे रैप भी सुनना है, फिल्म म्यूजिक भी सुनना है, गजल भी सुननी है, नुसरत फतेह अली खान भी पसंद है, केमिकल बिल्कुल ब्रदर्स भी पसंद है, मुझे मुझे जॉम्बॉय भी पसंद है, मुझे नया नाइस। प्रोडिजी पुराना प्रोडिजी मुझे सब पसंद है। यू नो मुझे ऐसा हाँ लगता है कि जितना आप ज्यादा सुनोगे ना, उतना आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपने न्यूरॉन्स की। बिल्कुल। हाँ वो आपके न्यूरॉन्स को पता चल रहा है कि मैं इस तरीके से भी एक्साइट हो सकता हूँ, वेरी मैं नाइस। इलेक्ट्रॉनिक बीट से भी एक्साइट हो सकता हूँ, यू नो मैं सितार की लाइन से भी एक्साइट हो सकता हूँ, मैं नुसरत की सिंगिंग से भी एक्साइट हो सकता हूँ, मैं इस चीज से भी एक्साइट हो सकता हूँ। और जब आपके पास इतना बड़ा पैलेट है इन सब चीजों का, आप यूज करो जैसे आपको यूज करना है। वेरी क्या नाइस। फर्क पड़ता है? आई थिंक इन जनरल पीपल शुड डू दिस। आई एम हैप्पी हाँ। दैट शी डज इट, बट इन जनरल आई थिंक एवरीवन शुड डू दिस। समझो मेरे जैसे मेरी फेवरेट चीज है मैगी नूडल्स, हम्म है ना, इट्स माई कंफर्ट फूड फॉर एग्जाम्पल। तो मैं जितनी बार खाता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, हम्म राइट? बट इफ आई ईट इट एवरी डे, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी हेल्दी फॉर मी? नो। Absolutely, right? That's why consuming just one style of music is also not healthy. हम्म Staying in one place is also not healthy. You हम्म know, you have to travel, you have to listen to new music, you have to socialize, you have to meet new people. Your thought process needs to be challenged. You know, कि लॉजिकली अगर आप मुझे चेंज करोगे तो ही मैं चेंज होऊंगा। हम्म हम्म अगर हम्म आप लॉजिकली मुझे चेंज नहीं कर सकते तो मैं चेंज नहीं होने वाला। If हम्म what you're saying makes sense to me logically, then I will change. And I'm always hunting for someone to change me because that हम्म is growth. That is good. Very nice. Yeah. This is so beautiful. Cheers, man. मैं last, yeah, cheers. I just want to come to the last topic of the day today, like the visual medium, the movies, the music videos, and the documentaries. What are some of your recommendations there? Like, and what's your relationship with the visual medium in general? There are only two ways that I consume content visually. One is entertainment, Hmm. and the other one is education. You know, in terms of entertainment, I see comedy shows, or Hmm. I'll see like kutte billi ke whatever Hmm. nonsense memes that I will come across. Hmm. Movies I very rarely see. Got it. The only thing that I have seen in the past couple of months, one is that Foundation a show that was on Apple Apple TV. TV. Yeah, How is it? that was very beautiful, man. Hmm. Really, really beautiful. So I'm also very curious about what's happening in space and what's going to happen in space, and um, so the more I learn about it, the more it like मैं जग जाता हूँ कि wow, Hmm. मैंने तो ऐसा कभी Hmm. सोचा भी नहीं था. Hmm. And in terms of education, I have a bunch of channels that I have subscribed on YouTube. I think YouTube in general is probably the most incredible source of being able to learn whatever you are interested in. It is decentralized, so Hmm. nobody controls it and everybody controls it. Hmm. So the hurdle is that you have to find the right content, you know. But the good thing is that the content is out there and you can consume it for free, you know.
this whole idea of centralized education system, उसका लाइफ ऐसा खत्म होने वाला है धीरे धीरे। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अब तो क्या मतलब हुआ स्कूल का ना, आप स्कूल तो सोशलाइज करने के लिए जा रहे हो अब आप, है ना, आप अपने दोस्तों से मिलूंगा, उसका लंच बॉक्स में से मैं खाना खाऊंगा, मेरे लंच बॉक्स में से वो खाना खाएगा, टीचर मेरे को बोलेगी वेरी गुड, whatever, all those sort of things. But the real education happens through these mediums, you know. Like for example, my son is very interested in chess, and he plays it really well actually, you know. पर उसको किसी ने नहीं सिखाया, वो chess.com से सीखा है सब कुछ, किसी ने नहीं सिखाया उसको। At the age of 8 or 9, when he started learning chess, I was like, wow, dude, that's really amazing. Now, when he goes online to YouTube or whatever, he's finding like legendary games and people who dissect those games. He watches those games and is like, Dad, see, I told you he's going to do that, you know? And for me also, like, I consume YouTube just like that, you know? For example, recently I realized that India has enough raw material to give electricity without any hiccups, you know, but the chain that is involved in from raw material to final electricity, the chain is fucked, you know, and that chain needs a fix. So the people who provide the raw material, the government that provides the raw material, which is coal, it's already there. And it's in abundance. We don't really are in shortage of that. People who, companies who generate electricity out of it, they don't really have any problem because the industry is already in place, you know. But the people who distribute this, I don't know what they're called, Discom, Doscom or something they're called, like those small companies who will basically make sure the thing is distributed in a systematic way, you know. Their systematic way is not systematic, and it creates a lot of ruckus because there are way too many permutations and combinations in it, and they're going in loss every year. Like, and it's not chota mota loss, it's like 30,000-40,000 crores worth of a loss. So when they are in loss, they're not being able to buy the electricity. It's not that the electricity is not there, they're not just being able to buy. So how they're playing this game is fucked up. That needs to be fixed. We think that we are not generating enough electricity. That's bullshit. We have enough electricity. अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ गोवा में बिजली है नहीं, तो हम बिजली कर्नाटका से खरीदते हैं, और कर्नाटका हमको बिजली सस्ते में देता है। अब हम वो बिजली का सस्ते में क्या कर रहे हैं, वो तो कर्नाटक पता ही नहीं है ना। आप समझ रहे हो? मैं ये सोच के बैठा हूँ कि भाई वैभव के पास पैसे कम है, तो मैं वैभव को कोई चीज दे देता हूँ, पर वैभव के पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, वो तो पता ही नहीं है। सॉरी, बैड एग्जांपल, बट यू गेटिंग माय पॉइंट। कनेक्शन इज नॉट देयर, you know. We don't understand it. The transparency is not in place. That's why the system sucks. Anyways, yeah, sorry, I'm talking too much. नहीं, this is great. Like बहुत मजा आ रहा है। आप YouTube पे like जैसे आपने books वाली ऐप खोल के बताया, do you want to maybe recommend us some YouTube channels that people can like subscribe to or that you visit often? आप phone में भी check कर सकते हैं। Think School, I think it's an Indian channel. I think Think School is the one who did this analysis of electricity. Very then nice. Another channel that I follow is Dr. Eric Berg. Like, people don't have a clear understanding of health and like all of these things, no? So he does a really good analysis of things, and he explains like how we should be taking care of our health. That's pretty cool. I follow a lot of food channels also, street food channels on YouTube. Can I share my screen with you guys? Yeah, you can. How do I do that? Like share screen एक green color का option आ रहा होगा Zoom पे, आप laptop है ना? Desktop, whiteboard, phone नहीं, desktop ही सही है। फिर desktop, पूरा desktop आ जाएगा। हाँ, पूरा आ जाएगा ना? I think these are my like things that I subscribe to. This guy, Dr. William Lee, he's got a really good book, and he also talks about using food as medicine. You know, what sort of food to eat and how to eat and all that. Really good stuff. That also I follow. Yeah. Sometimes they have really good guests. So you learn a lot about things through that. Wim Hof, this guy, he's pretty cool. Wim Hof, got it. Yeah. I see a lot of like rasoi stuff on YouTube. My lockdown rasoi. हाँ, मैं बहुत देखता हूँ यार, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं खाना बनाता भी हूँ ना अपने हाथ से, इसलिए।
जॉर्डन पीटरसन के भी पॉडकास्ट अच्छे होते हैं. You have subscribed to him, Yeah, ना? Like the podcast yeah. he does. Yeah. There's Ali Abdal also. Like he makes good videos on books and like productivity. हाँ, मुझे जो ऐसा मैं देखता हूँ, मुझे जो ठीक लगता है फिर मैं फटाक करके सब्सक्राइब कर देता हूँ, तो कुछ ना कुछ आता ही Yeah. रहता है हमेशा, you know. Tutorials also, like music related stuff. अब Nice, तो मैं nice, like why nice. will I not go and like find it on YouTube, which is the easiest way to do it, you know. Insider is there. Insider movies के बहुत अच्छे videos होते हैं ना कि like Mm. वो very very good videos. School of Life is also there. Nice. Yeah, School of Life is pretty good. Yeah, I Hmm, think this guy hmm, is pretty cool. Wendover Production. क्या बनाते हैं ये भी documentary style stuff, you know. Got it. But really good. This guy does like really really good analysis. He does like वो उसका जो homework है ना वो बहुत अच्छा homework है. Hmm, hmm. So, and it's very difficult to find people who can do this in a way where the opinion sort of doesn't come into perspective, you know. आप क्या सोच रहे हो मुझे बाद में बताना, है क्या वो मुझे पहले बताओ. जैसे मेरा बेटा अभी 10 साल का है, तो वो मुझसे कई बार पूछता है, नो, से फॉर एग्जांपल व्हाट इज 1+1, तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ कि 2, यू नो, या मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई तुम मुझे बताओ, ये 1 है और ये 1 है, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा. Then he will get the answer of 2, meaning that I'm not giving him the answer, I'm telling him how to get the answer. That should be the agenda, कि आप उनके लिए इतना ज्यादा सिंपल कर दीजिए कि वो उनको समझ में आ जाए. जैसे ध्रुव राठी करता है ना, वो बहुत अच्छा करता है काम, यू नो. मुझे बहुत पसंद है कि वो if he has an opinion, he will write there that he has an opinion. ये इसने बाद में करना चालू किया कमेंट्स पढ़ के. पहले वो मिक्स I know. करता रहा. हाँ, बट फिर उसने कहा कि मैं अलग से करना चालू कर देता हूँ. Yeah. मुझे तो पसंद था because I align with his opinion, so मुझे इतना टेंशन नहीं होता कि वो क्यों ऐसा उसने बोल दिया. It's very logical, you know. So logically, whatever he's saying, no, I understand that and I relate to it and I'll align with his thought process. But a lot of the time, you can't align with other people's thought process. भाई ऐसा था ही नहीं, तू सोच क्यों रहा है ऐसा, you know. And now you're changing the perspective of all the people who are actually watching your channel, and that's hard. That's cheating. काफी अच्छे आपने ये चैनल्स बताए. दिस इज ग्रेट. एंड आई भी थिंक बहुत सारे लाइक क्या कोई इंस्टा की भी आप बताना चाहते हैं? इंस्टा पे लाइक इफ देयर आर एनी कूल स्टफ यू फॉलो ऑन इंस्टा. यार इंस्टाग्राम पे तो नो, आई कंज्यूम इंस्टाग्राम ओनली फॉर नॉनसेंस. Generally only for nonsense. I don't go to Instagram if I want to learn something. Got it. When I'm tired and I don't want to use my brain power anymore, I go to Instagram and I watch like nonsense videos. I recently came across this one friend of mine sent me on Instagram. I don't know. Can you read this? My dad says you spawn people. He's a yeah. I love this. It's so good. So this is what I consume on Instagram, and this is you know there's this meme format ki every person has an FBI guy. Right? कि आप कुछ देखे, shit, my FBI guy would be like, अरे यार ये आज क्या देख रहा है. Yeah, totally. मुझे तो बड़ा मजा आता है. Like I think meme is being able to make meme is a very 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 creative art form. You know, it should be looked upon as that, not कि ऐसा whatever, you know. And it's a very selfless art form. Like बना के बस छोड़ दिया आपने. आपको ये नहीं है कि तूने मेरे को क्रेडिट नहीं दिया. Like वो नहीं होता. Yeah, it's very beautiful, man. अभी एक छोटी सी चीज में उसने कितनी बड़ी बात बोल दी है. हाँ, पूरी स्टोरी है. पूरी स्टोरी है 2 लाइनों में. करके दिखाएं आप, you know. Nice. But this is great. आपको पता है लाइक व्हेन कोविड हुआ था, जब अभी मार्च 2020 में जब स्टार्ट ही हुआ था, उसके बाद क्वारंटीन में मैंने भी कुछ ऐसे ना गैराज बैंड पे कुछ गाने बनाए थे 2-3. एंड यू नो आई हैव अ स्टेज नेम. आई वांट योर ओपिनियन अबाउट इट. सो आई कॉल, मैंने अभी ऐसे कुछ लॉन्च वॉन्च नहीं किया. सो माय स्टेज नेम इज मिष्ठान भंडार एंड ऑल माय सॉन्ग्स आर नेम्स ऑफ स्वीट्स. पंजीरी, शहद और ऐसे सारे ऐसे ना, हर चीज में ये वाला एक एंगल है. एंड आई थिंक मैंने खुद को एक टारगेट दिया हुआ था कि एक साल में 50 SoundCloud फॉलोअर्स चाहिए. लाइक जब स्टार्ट किया था. आई थिंक नाउ आई हैव 51-52 फॉलोअर्स ऑन SoundCloud. That's amazing, man. That's awesome, no? आपने जो टारगेट सेट किया वो टारगेट मिल गया आपको. Yeah. So what do you think of the stage name? Will it work? Mishtan Bhandar. Everyone was against it. जितने लोगों से मैंने Insta. I think it's very beautiful. It's unique, you know. How you, like for example, there's another friend of mine who I think is also based out of Delhi.
he's a guitarist. उसका भी ऐसा ही कुछ नाम था, मिष्ठान भंडार नहीं था, कुछ और नाम था, पर तो उसको भी मैं सजेस्ट कर रहा था, उसका भी मिठाई से कुछ लेना देना था। मैंने कहा तू जब शोज करेगा ना तो तेरे शोज में ऐसा लोगों को ऐसा like you should serve them with हाँ बूंदी के लड्डू और ऐसा पान या और या कुल्फी, और रूह अफ़ज़ा और फालूदा, ऐसी सब चीजें मिलनी चाहिए वहां पे। But yeah, I mean, just thinking very creatively, I think anything can make sense if you know how to sort of put things together. If you dissect my music and see every block of sound separately, it doesn't make sense. But when you put it all together, is when you realize कि हाँ ये कुछ तो बन सकता है इसके अंदर से, हाँ Yeah. So या Mishtan Bhandar is a very, very cool idea. If you put together like music also that way, if you put together your show design, the production and everything also together that way, हाँ then it will make sense for people to also understand कि हाँ अच्छा ये कहना चाह रहा है बंदा, very cool यार, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया कि आप स्टेज पे जा रहे हैं तो आप धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं स्टेज पे, ऐसा, और आपके ऐसे पान की पूरी चिपक रही है ऐसे टाइप, that is so cool, very स्वाहा nice, लड्डू फेंक रहे हैं आप टाइप, very आपका nice. ड्रॉप आ रहा है तो ऐसे लाइट्स आर नॉट गोइंग क्रेजी, ऊपर से गेंदे के फूल गिर रहे हैं सबके ऊपर like that. You have to think out of the box. Very nice. But like बहुत ज्यादा मजा आया like न्यूक्लिया मेरे को आपसे बात करके. This was amazing. And is there Definitely, thank anything you. that like would have that I might have not asked you and कि यार ये बात नहीं की हमने, कोई ऐसी चीज जो मेरे एंड से रह गई हो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? I really came with a very open mind. I had no idea. मैंने एक्चुअली जानबूझ के आपकी कोई वीडियोस नहीं देखे क्योंकि फिर मेरा पर्सपेक्टिव सेट हो जाता, तो मैंने सोचा ऐसे ही ब्लैंक होके जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाता है। I so I've recently realized that my traveling I want to divide now. When I'm traveling for work, I'm only going to travel for work. And when I'm traveling without work, then I'm not going to bother about work, because all throughout my life, I have traveled for work, and on side, I have done whatever little bits and bits that I can do. कहीं यहाँ थोड़ा घूम लिए, कहीं वहाँ थोड़ा time spend कर लिया. But it's not worth it. So now I divided कि अगर मैं काम से जा रहा हूँ तो फिर मैं काम के लिए ही जाऊंगा, फिर उसके अलावा मैं दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा. Then I can Got it. really be focused towards my work. In terms of food, I am, yeah, I mean, Are you into sweets, Mishtan Bhandari में? यार Like मुझे इतना पसंद है, पर मैं जितना पढ़ रहा हूँ ना, my gut health is not very good. yeah. So I have to really take care of myself now. I'm 42. I think post 40 is when your metabolism kind of takes a deep dive. Testosterone starts falling down as well. And if you don't exercise and take care of yourself, then it's a difficult one. तो मुझे मीठा बहुत पसंद है. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम नहीं तो 200-300 करोड़ पराठे तो खाए होंगे. मेरे घर में रोटी बनती नहीं थी, मेरे लिए सिर्फ पराठे ही बनते थे. सुबह पराठे, दोपहर को पराठे, शाम को पराठे, रात को पराठे. किसी भी चीज के पराठे मेरी माँ बना देती थी. हवा का भी पराठा बना सकती है मेरी मम्मी. So now I cut down on all of those things, but I love Yeah. food, all sorts of food. मुझे सब टाइप के खाने पसंद है. मीठा, तीखा, स्ट्रीट फूड तो oh my god, I fucking love it, man. दिल्ली का स्ट्रीट फूड, बॉम्बे का स्ट्रीट फूड. There's so many channels that I follow just like street food channels. एक तो मुझे अच्छे से याद है. I think this guy is based out of Delhi or Chandigarh. His मैं हूँ आपका हरिया. That is his tagline. And Okay. oh my god, the food that he shows on his channel is so fucking unbelievable. मेरे मुंह से पानी टपकता रहता है. तो fuck में देखता हूँ, मुझे खाना है. Really, I'd like, yeah, food is fucking amazing, man. Food is life. बट जैसे आप अभी हेल्थ के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, सो आर यू इनटू वीगनिज्म या आप लाइक सब लाइक नॉनवेज वगैरह के साथ लाइक आर यू ओके? I think I'm in transit. मैंने पिछले सालों में कई बार ट्राई तो किया कि मैं जैसे मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दिया था बीच में, पर ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाया. वो चिकन टिक्की की खुशबू आई तो मैं वापस से चला गया. तो ज्यादा दिन के लिए मैं छोड़ नहीं पाया उसको.
मुझे ऐसा लगता है कि we need to follow a Mediterranean diet, where you eat non-vegetarian food as well, but not in abundance, not like that's your primary source of all sorts of nutrition. Plant-based diet is number one, and then you use everything else like once or twice a week, in terms of non-vegetarian food. That is how one should consume it. That will also create a really good sort of a push in terms of reducing the carbon footprint, क्योंकि आप जितना, हमको तो ऐसा लगता है हम गाड़ी चला रहे हैं, डीजल की गाड़ी, इसकी बड़ी गाड़ी है, इसका कितना पोल्यूशन होता है, ऐसे लोगों को इस पर गाड़ियां छीन लेनी चाहिए. Actually, that contributes much lesser as compared to the animal breeding that we do, that creates a humongous carbon footprint. Pork and beef and mutton and even poultry to a great extent, we need to cut down on that, so if you really want to be clever in terms of like being able to create a better future for the kids, you need to cut down on eating non-vegetarian food. So my current thing is 5 to 6 times a week I'm on a vegetarian diet, and I'm right now trying to cut down on dairy products. So milk though I don't consume at all. I consume in terms of dairy only cheese and yogurt. Cheese also very, very less. Yogurt literally every day. And then I consume fish and chicken only. Other meat sources, not at all for me. Got it. But once a week, only once a week. Otherwise, I don't. Got it. So, yeah, I'm glad we talked about, like, we touched upon every major department जहाँ पे मैं आपसे recommendations निकलवा सकता था, and I got some amazing recommendations और मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आया. Like, I think I could feel the connect where like मेरे को वैसे कोई questions prepared नहीं थे, but just like बहुत मजा आया. I hope you also had fun. I loved it, man. Good fun. जितने लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप चलचित्र टॉक्स को सब्सक्राइब करें और रोज सुने और रोज उनका गाना भी सुने और उनके शोज भी देखें और उन पे कमेंट भी करें और वो जो बेल वाला आइकन है वो भी दबाएं.